Hello everyone, welcome to the Biotricks. Today I'm going to discuss about the fundamental unit of life. Okay, so now I have a question. What is the structural and the functional unit of life? So the simple answer is cell. Okay, so now I have another question, that is, why did we use to call cell the basic structural unit of life? So for this I have some images. Let's observe them. Okay, so the first image is for bricks है ना, and the second image is of wall, थर्ड इमेज है रूम की, और फोर्थ इमेज जो है वो बिल्डिंग है एक. ठीक है. सो इन डायग्राम्स के थ्रू हमको क्या पता चला, इन इमेजेस के थ्रू हमको क्या पता चलता है कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की यूनिट क्या है, ब्रिक. सो ब्रिक्स जो है वो कंबाइन होकर के वॉल का फॉर्मेशन किए, और ये वॉल जो है कंबाइन होकर के रूम का फॉर्मेशन करता है, और कई ढेर सारे रूम मिलते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्लोर का फॉर्मेशन होता है, और जब कई ढेर सारे फ्लोर्स मिल जाते हैं तो एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है. कुछ इसी तरीके से हमारे अंदर भी डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं. अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कई ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बना होता है. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन हैज डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, excretory system, reproductive system, nervous system, etc. Okay, so for example, if I'm talking about the digestive system, so digestive system is made up of so many organs or different type of organs. ठीक है. So organs like mouth, stomach, intestine. ठीक है. सो इस तरीके से हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन है, माउथ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, और इस तरीके से ये सारे ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पर्टिकुलर फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करेगा. तो इसी तरीके से अब बात करते हैं ऑर्गन की. सो ऑर्गन जो है वो मिलकर के बने होते हैं टिश्यूज से. तो जब कई ढेर सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं. और टिश्यू कैसे बनता है, जब कई ढेर सारी सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं तब हमारी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है. सो बेसिक जो यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, दैट इज सेल. सो दैट्स व्हाई सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ life. Okay, so cell combines together to form tissue. Okay, so the for tissue we have certain restrictions that all cells must have similar origin. ठीक है. So the cells having similar origin and performing a specific function is called tissue. Tissue combines together to form organ. Organ combines together to form an organ system, and organ system combines together to form an organism. So this is a level of organization. So the next is cell discovery. So the first cell was discovered by Robert Hooke, and the cell discovered by Robert Hooke was a dead cell. ओके, सो इन्होंने किस तरीके से सेल डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ कॉर्क. ठीक है. इन्होंने कॉर्क को लिया था एंड ही कट थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क एंड प्लेस्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप. ओके, सो माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो इनको कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया. कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया. सो ऑब्जर्व क्या किया इन्होंने, हाउ द फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड. सो रॉबर्ट हुक took a cork and cut a thin section of cork and placed it under microscope, and then he observed a honeycomb like structure. Honeycomb
honeycomb-like structure, and he used term cell for each and every compartment of honeycomb-like structure. Okay, so the cell word is came from Latin word that is cellula, and this cellula means a tiny room. ठीक है, a tiny room or a little room. So the first living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek. ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और माइक्रोस्कोप को इंप्रूव करके इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया. नेक्स्ट इज सेल theory. So cell theory was proposed by Sleden and Son, and which is further explained by Rudolf Virchow. So let's discuss the point of cell theory. Okay, so the cell lineage theory was proposed by Rudolf Virchow, and according to cell lineage theory, all cell derived from pre-existing cell. Okay, so the cell theory, the first point of the cell theory is all organism is made up of one or more than one cell. If they are made up of one cell, they are called as unicellular organism, and if they are made up of more than one cell, they are called as multicellular organism. So the second point of cell theory is सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो हमारी बॉडी में सेल क्या करता है, सेल बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है और जो भी बॉडी की फंक्शनिंग होती है वो सेल्स के थ्रू ही होती है. सो सेल्स क्या है, सेल्स जो है वो हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट भी है और हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसीलिए सेल जो है वो बेसिक structural and the functional unit of life. And third point is all cell derived from pre-existing cell. So this is cell lineage theory given by Rudolf Virchow, and for this statement he used a term that omnis cellula a cellula, omnis cellula e cellula. ठीक है, सो omnis cellula e cellula का मतलब क्या है, all cell derived from pre-existing cell. Okay, so now what does pre-existing mean? So pre का मतलब होता है पहले और exist जो करता था. ठीक है, सो सेल डिवीजन होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये एक सिंगल सेल है, सो अब ये सेल डिवाइड होकर के दो सेल में बट जा रही है. सो अब इस सेल का एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है. ठीक है, सो जो भी नई सेल आती है वो अपने पहले वाली सेल से आती है, ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है. ऑल सेल डेराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. क्लियर, सो अभी ये जो दो सेल है ये अपने पहले वाली सेल से आएंगी. अब ये दोनों सेल फर्दर सेल डिवीजन में जाएंगी तो यहां से हमको और ढेर सारी सेल्स मिलेंगी. तो ऑल सेल डेराइव्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो ये जो सेल है, ये जो हमारी सेल है, ये दोनों ये अपने से पहले वाली सेल से आ रही हैं. प्री मीन्स पहले, जो पहले एग्जिस्ट करती थी बट अब एग्जिस्ट नहीं कर रही. ठीक है, so all cell derived from pre-existing cell. So the next is prokaryotic and eukaryotic cell. So prokaryotic word is made up of two words. The first one is pro, that means primitive, है ना, and the second word is karyotic, which is came from carrion, and the meaning of the carrion is nucleus. The cells having primitive nucleus is called prokaryotic cell, while U means होता है true or well defined. And again carrion means nucleus. Okay, so the prokaryotic cells having primitive nucleus, while eukaryotic cells are those having true well defined nucleus. Okay, so the primitive nucleus का मतलब है they lacks nuclear membrane. As we can see in this bacterial cell, the cell wall, below to the cell wall there is cell membrane, and
the nuclear content is not bound by the nuclear membrane. So we can say that the nucleus of bacterial cell totally lacks nuclear membrane. Okay, and that's why the nucleus present inside the prokaryotic cell is called nucleoid. So oid का मतलब होता है like that, like that. So in the bacterial cell, there is centrally dense region which has same the function as the nucleus present in eukaryotic cell. That's why the centrally dense region present in prokaryotic cell are called nucleoid. मतलब like nucleus के जैसा. And in this diagram we can easily observe that there is additional layer which is surrounded our nuclear and it is called nuclear membrane. So nuclear membrane अगर present है तो वो सेल होगी यूकैरियोटिक सेल और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो वो सेल होगी प्रोकैरियोटिक सेल. Okay, so the difference between eukaryotes and prokaryotes. So eukaryotes में क्या होगा? The first difference is eukaryotes has well defined nucleus and the prokaryotes lack nuclear membrane. Next is membrane bound organelle are present. Membrane bound organelles are present. But in prokaryotes, all membrane bound organelles are absent. The third difference is example. So all protist plants, fungus and animals are eukaryote while bacteria are prokaryote. ठीक है, so these are the basic difference. So eukaryotes contain 70s and 80s both type of राइबोसोम. 70s एंड 80s बोथ राइबोसोम्स जो है वो हमको यूकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ओनली 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. सो जब हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे तो ये डिफरेंट राइबोसोम्स के बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर organism. So on the basis of number of the cell, organisms are categorized into unicellular and multicellular organisms. So unicellular organisms are those organisms that are made up of only single cell, है ना. और सिंपली ये सेल्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे ओनली कंटेन सिंगल सेल. सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल मिलेगी और लाइफ की जो भी एक्टिविटी है वो इसी सिंगल सेल में परफॉर्म होगी. सो द एग्जांपल्स ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास एंड yeast. So unicellular, they may be eukaryote and they may be prokaryote. ठीक है, so amoeba is eukaryotic and yeast is also eukaryotic. Bacteria are prokaryotic. And the next is multicellular organism. So multicellular organisms are those organisms that are made up of more than one cell. जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलके बने होंगे उनको हम लोग बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो फॉर एग्जाम्पल लायन एंड humans are the example of multicellular organism. Is it clear? So this is all for today. Thank you.